Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों की वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj, and welcome, Dr. Yamini. A quick look at the headlines. Domestic stocks witness modest losses. Sensex closes below 60,000 mark. Nifty settles below 17,900 points. Rupee weakens 26 paise against the US dollar. And gold prices slip below 50,000 rupees per 10 gram for October contracts at the multi-commodity exchange. घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 60,000 के स्तर से नीचे फिसला। निफ्टी 17,900 के स्तर से नीचे आया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 26 पैसे कमजोर। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्देशीय कारोबार में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य घटकर 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आया। घरेलू शेयर बाजार में आज 0.5% से अधिक की गिरावट हुई। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख मिला और हमारे यहां निवेशकों ने थोड़ी बहुत खरीदारी की, लेकिन बिकवाल हावी रहे। सेंसेक्स 60,000 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,900 के स्तर से नीचे आ गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 413 अंक यानी 0.68% घटकर 59,934 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 126 अंक यानी 0.7% घटकर 17,877 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन देखें तो उनका प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.31% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.06% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of more than 0.5%. Both stock indices fell amid mixed cues from other Asian share markets. The Sensex closed below the 60,000 mark, while the Nifty settled below the 17,900 level. The Sensex declined 413 points, or 0.68%, to finish at 59,934. The Nifty also fell 126 points, or 0.7%, to end at 17,877. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.31% and the small-cap index added 0.06%. In the Sensex pack, 7 companies posted gains while 23 logged losses. Maruti rose 3.2%, Power Grid gained 2.2%, NTPC climbed 1.2% and HDFC added 0.3%. On the other hand, Tech Mahindra tumbled 3.1% and Infosys fell 2.9%. Tata Steel and Bajaj Finserv both declined 1.9% each. In sectoral indices at the BSE, 6 sectors gained while 13 logged losses. The power sector rose the most as it added 2.1%. Utilities gained 2% and auto rose 0.8%. On the other side, IT index fell 1.6% and the tech sector dropped 1.5%. Metal and realty both declined 1.1% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,639 companies gained while 1,859 fell. Shares of 122 companies remained unchanged. Dr. Yamini, when we look at the stock market today, in the sectoral indices, we've seen clearly that some sectors are going up and some are going down. Do you see a pattern or expect it?
Well, yes, we can see a pattern. If you see the IT and the pharma sectors, they've not done so well. Whereas if you see the auto sector, it has done well, which clearly indicates that there is a fear of the stagflation in the world economy, especially the US, which is affecting the IT and the pharma sector, especially because there are exports from the IT sector. Also, if you look at the auto sector, it has been one of the factors which has been somewhere or the other giving the signal of the recovery of the economy, Right. where the passenger vehicle cars in terms of their demand have been on a rise. Also, if you look at the overall pattern in terms of the strength of the economy, the reports on the GST collections and the higher targets of about 1.5 lakh also indicate the strong strength of the economy. The easing of the WPI inflation also shows corrective measures which are effective in the market. But there continues to remain a lot of concern in the markets, primarily because internationally things are not so good. As you see, stagflation fears in most economies, the Fed raising its interest rates aggressively. Also, the overall uncertainty which continues to hang around because of the Ukraine and the Russian war. And also, overall, one is not very clear as to how the inflation would be tackled, both on the supply side as well as because of the crude oil prices. So these are some of the factors. What is also playing an important role in the market in India is the fear that the RBI would also go for an increase in the rates. So that is also by about, let's say, 50 basis points. So that is also playing on the economy and the markets. Right. यामिनी जी, हम यदि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों को देखें तो उसमें होता यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी यानी जो एक्सटेंडेड मार्केट है वहां पर हम अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन देखते हैं। आज भी यदि सेंसेक्स और निफ्टी थोड़े घाटे के साथ बंद हुए हैं तो मिड कैप इंडेक्स है वो बढ़त के साथ बंद हुआ। ये क्या दर्शा रहा है या ये प्रवृत्ति टेंडेंसी क्या है? देखिए, ज्यादातर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ज्यादा बेहतर तब करते हैं जब मार्केट उनके ऊपर बेट करना पसंद करती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें उसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं दिखती और ग्रोथ दिखती है। ओवरऑल क्योंकि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग रही है और काफी अच्छे स्तर पे जो है उसके लेवल्स रहे हैं, प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच गई है, वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रिस्क है वो इतना नहीं दिखता जितना पहले दिख रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कारण जरूर हैं जिनकी वजह से काफी चीजों पे फर्क पड़ा है और जिसका असर हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा है। और अगर हम खास तौर पे देखें आर्थिक मामलों में काफी हद तक एक अच्छा असर नजर आया है, चाहे वो जीडीपी के ग्रोथ रेट को लेकर के हो, चाहे वो हम कहें कि इन्फ्लेशन को हम ईज करने की बात कहें जो अगले 2 क्वार्टर्स में माना जा रहा है कि कम हो जाएगा। कोशिश ये भी की गई है कि जितने भी और इंडिकेटर्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो भी जो दर्शाते हैं वो एक अच्छा इकोनॉमिक सिनेरियो दिखाते हैं। तो इन सभी से एक स्टेबिलिटी मिलती है मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को और लोग उसमें रिस्क लेने को तैयार होते हैं क्योंकि उसमें ग्रोथ ज्यादा मिलती है, खास तौर पे अगर आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन अच्छा हो तो। यहाँ पर मैं आज के कारोबार पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और खासतौर से पावर सेक्टर में ले चलना चाहूंगा। वहां 2% से अधिक की बढ़त देख रहे हैं। ये तात्कालिक एक दिवसीय माने ये पावर सेक्टर में आज की तेजी के पीछे कोई खास कारण है? ये देखिए, ओवरऑल पावर सेक्टर की ग्रोथ काफी हद तक नजर आ रही है और इसे एसेंशियल सेक्टर भी माना जाता है और इस सेक्टर की जो जरूरतें हैं वो काफी हद तक इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा हो या किसी और माध्यम से हो, वो काफी तेज रफ्तार से हो रही है। अगर आप पीछे के बजट्स भी देखें तो वन ग्रिड की बात की गई थी नेशन वाइज, उसका भी एक खासा असर नजर आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे होगा और सप्लाई चैनल्स पे होगा। तो ओवरऑल पावर सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, खास तौर पे डिमांड की तरफ से, और माना जाता है इसमें डिमांड काफी रहेगी। Dr. Jamini, when we speak of volatility, we also know that now
especially with the Fed Reserve taking the stance and their declaration recently to say that, volatility is somewhere becoming the new norm. And hence monetary policy has also become more reactive to that. And two parts of this question. A, does monetary policy still have the power to actually manipulate and control the different forces? And the second is vis-a-vis India to say that, yes, we are managing to somewhere limit inflation spiraling, and we are looking at decreasing inflation also. But if it carries on over a period of time, it definitely gets built into your wages and your prices. Somewhere people cater. And so investment into, new markets and private investment decreases. So your take on these two, your US vis-a-vis India? Well, overall, if you look at the monetary policy stances, during the COVID time, they were mostly accommodative, primarily to provide more and more money to people because there were sufferings and people were in very vulnerable situation. Whether it was MSMEs or it was, other smaller groups. The larger set of companies did have reserves to take care of themselves, but people who were on the poorest level, they were not able to, and hence the monetary policy easing was adopted. As and when it was found that after the COVID, the inflation rose to, let's say in US 40-year high, and in UK also a 40-year high. Also, the growth rates were sliding down. It became necessary to take care of the inflation, primarily to protect people's standard of living. And for that, the monetary policy tightening began. Okay. And that is how they would like to control the supply of money. Also, if you would have seen the way the rates have increased in India, about 3 lakh crores of liquidity was sucked out of the system itself. So that has an effect on the overall money supply. If they would have raised the CRR or the SLR further, then that would have sucked more liquidity and the banks would have found it difficult to further give credit. Though which we have seen in the COVID times or the others, the banks have taken a very, not a very easy way of giving loans. They've been much more stricter and that has affected investments. Mm-hmm. But if money is easily available and is available at a lower interest rates, the demand continues to be higher. And because the demand continues to be higher and the supplies are limited, what will happen is there would be a continuous rise in the inflation. And what inflation targets most is the poorest of the poor. Absolutely. Primarily because he is vulnerable to his daily requirements. And the maximum expense that one makes is on food. And so the food expenses become very, very high and they're not even able to meet their 2 square meals. So it becomes very essential to reduce inflation to protect people from further drifting down to poverty. So tightening of the monetary policy is primarily aimed to take care of that inflation which does not inflict and push back people into poverty. Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ, 79 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.06% बढ़कर 109.73 पर चल रहा था। यामिनी जी, रुपए की स्थिति पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। रुपए में पिछले कुछ सत्रों से हम कमजोरी देख रहे हैं और प्रतिदिन रुपया नीचे जा रहा। ये अंतर्राष्ट्रीय कारकों से है या घरेलू कारण भी हैं? जी देखिए, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कारण ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले FIIs का आउटफ्लोज रहा है। जुलाई तक हमने देखा कि जो FIIs थे वो नेट सेलर्स थे। जुलाई के बाद हमने फिर वापस रुख देखा FIIs का अपनी तरफ, लेकिन क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता रहा, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रहा है US मार्केट्स का इंडिया मार्केट्स के मुकाबले वो बढ़ता गया, तो जो इन्वेस्टर्स का रुझान रहा वो US की तरफ रहा, जिसकी वजह से रुपये पे सीधा असर पड़ा। जो दूसरा असर हमारे रुपए पे पड़ता है वो है क्योंकि रुपए डेप्रिशिएट करता है तो हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो भी हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ती है।
चौथा कारण ये भी है कि कोई भी निवेश हमारे यहाँ महंगा हो जाता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन की दर है, जो महंगाई की दर है, वो भी बढ़ जाती है। और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसके डोमेस्टिक कारण तो नहीं है ज्यादा, पर इसके ज्यादातर कारण रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की प्राइसेस। और क्योंकि वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हायर लेवल पे थी, वो ही हम इंपोर्ट कर रहे थे, उनकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, और जिसकी वजह से सभी चीजों की और सभी पदार्थों के दाम बढ़ गए। और वो महंगाई के दर की वजह से जो हमारे यहाँ निवेश करने की स्थिति हुई, वो लोगों के जो रिटर्न्स हुए उसके ऊपर असर कर गई, जिसकी वजह से सीधा हमारे रुपए पे आप देखें तो असर पड़ता है। Dr. Yamini, exports grew by 1.6% in August. Good news, and exporters are confident that, expecting the further monetary policy direction, that exports are likely to really grow post-October in India. But on the other hand, our imports are getting more expensive. We are importing a little more, and our trade gap is increasing. Is it a cause for concern? It is a cause of concern because one would like to reduce the trade gap. But one needs to see what factors are in control and what factors are not in control. The trade gap is being affected by crude oil prices specifically, and that is not within the control of the country. Though there have been means of actually trying to have contracts with countries which can supply cheaper oil, but otherwise there is not overall control over those factors. The other factor that is also causing much more effect on the trade factor is the fact that there is gold consumption also, and there is crude oil consumption. So these two consumptions are causing maximum amount of import bill to us. Exports, the country has tried to increase its base. Also, the value of the exports have been increased by a lot of investment in value-added products. Also, with a lot of policies that have been brought about, one district, one product, local for vocal, and the others have been helpful in the product, the PIL scheme. So there have been many incentives that have been given to the exporters, plus the depreciation by itself adds value to the exporters. So I think there are a lot of good points to it, and what is not in control, one cannot really do much about it. Right. Dr. Yamini, we'll go in for a short break, but when we come back, we'll want to learn a little more your responses to the international market. Plus, we, of course, have our stories on the dairy sector and one on the transport sector. But right now, we take a break. Stay with us. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back. We are in conversation with Dr. Yamini Agarwal. Dr. Yamini, please let's take a look at the stock markets. The international ones, Asian stocks today steadied from recent losses, while Chinese indices fell after the People's Bank paused its monetary easing measures and increased pressure from a hawkish U.S. Federal Reserve. Hong Kong's Hang Seng Index gained 0.4%, Singapore's Straits Times rose 0.3%, and Japan's Nikkei 225 added 0.2%. China's Shanghai Composite Index plunged 1.2%, and South Korea's Kospi fell 0.4%. European shares were mixed in intraday trade. London's FTSE 100 climbed 0.3%, while Germany's DAX slipped 0.1%, and France's CAC was 0.4% down when reports last came in. आइए चले अमरीकी शेयर बाजार। अमरीकी शेयर बाजारों में पिछले कुछ सत्रों में हुई भारी गिरावट के बाद कल निवेशकों ने लिवा लिखी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सूचकांक 0.1% लाभ के साथ बंद हुआ।
S&P 500 में 0.3% की वृद्धि हुई। उधर नेस्डेक कंपोजिट सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया। डॉक्टर यामिनी, हम वैश्विक बाजारों या कह लें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। दुनिया भर में जो एक मंदी के आसार दिख रहे हैं, वह कितना प्रभाव छोड़ सकता है वर्ष 2022 पर, क्योंकि अब लगभग 2-3 महीने बच रहे इस कैलेंडर ईयर के। जी देखिए, विश्व भर में काफी हद तक जो स्टैगफ्लेशन है और मंदी है उसके जो फियर्स हैं वो काफी हद तक नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें, यूएस कंटिन्यूअसली अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ यूके ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और यूरोप में भी ऐसा ही कुछ हाल है। कोशिश यही की जा रही है कि सभी देश अपने महंगाई के दर को काबू में कर सकें, पर इसको काबू में करते करते क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमीज हैं वो मंदी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। उनके पास ज्यादा से ज्यादा निवेश नहीं आ पा रहा है, ज्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे और इससे ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्लो करती जा रही है। और इसकी वजह से जो और भी देश हैं, अगर आप देखें जो ग्रोथ की तरफ हैं, उनको भी कमी नजर आ रही है, क्योंकि काफी हद तक ट्रेड भी एक फैक्टर प्ले करता है ग्रोथ के अंदर। तो जब इन इकोनॉमीज से डिमांड नहीं आएगी तो इकोनॉमीज जैसे चाइना है उनके पास डिमांड नहीं जाएगी और वो भी स्लो ग्रोथ पे हो जाएंगी। रशिया का जो वॉर है यूक्रेन के साथ, उसका भी खासा असर इकोनॉमीज पे पड़ा है। अगर आप देखें, मंदी की स्थिति इसलिए भी और महंगाई का दर इसलिए भी ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे नियंत्रण नहीं पाया जा रहा और वो काफी जो है ऊंचे स्तर पर है, जिसका सीधा असर हर एक इकोनॉमी को एनर्जी क्राइसिस की तरह पड़ रहा है। और क्योंकि ओपेक उसे आगे नहीं बढ़ाने की सोच रहा, तो वो सीधा असर उनके अपनी एक अर्थव्यवस्था पे पड़ करके मंदी की तरफ लेकर के जा रहा है। ज्यादातर अगर आप जो अभी पीएम बने हैं यूके के अंदर, उनका भी चार्ट देखें कि उन लोग क्या करना चाहती हैं। वो टैक्सेस को कम करके या इन्वायरमेंटल लॉज को थोड़ा आगे करके या कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे लोगों का जो स्तर है वो वापस वही रह सके जो पहले था, और वो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं महंगाई की वजह से। और क्योंकि इसको तोड़ने के लिए सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को जो है बढ़ाने का ही विकल्प रह जाता है, इसलिए मंदी ग्रोथ रेट जो एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है उस पे खासा असर पड़ जाता है। Dr. Yamini, India is seeing growth and somewhere we are going against what the world is looking at, and we are not worried really about depression, more or less stable. We have our own internal demand, etc. And of course, investment within the country is taking place from the government sectors and also from the private sector. Now, do you think, because the private sector has to see long-term growth and increase in demand, and somewhere we are linked internationally to the rest of the world, do you think there's skepticism in the private sector, or they're saying they want to wait for some more time? Do you think that investment is also happening? Well, when we look at our economy, it is still the fastest growing economy in the world, with a 7% and higher, 7.2% growth rate, which is aimed at. Right. And reaching to the pre-COVID levels, it has been at a faster pace with the vaccination. Vaccination itself was the toughest job with the entire population base that we had. The slow and gradual recovery has built in the confidence among people. So there has been a strong focus. With that, there has been an added advantage of the fiscal measures which the government has been taking in improving the infrastructure and providing for schemes that can aid different groups, which includes women, MSMEs, and the farmers. Social protection has been an advantage in terms of inclusivity to the different welfare schemes that have been brought about, whether it was Ayushman Bharat, PM Samman Kisan Yojana, Ujjwala Yojana, or the sanitation drives, or others. There has been a 15.5% growth in the credit in the bank sector. So all these factors do indicate that the private have the strength. What adds advantage to the private sector is the fact that the stock markets are also doing very well, right? Which gives further, confidence to people that the market has faith in the long-term growth projections of the economy.
And it is not only the economy by itself or the RBI or the agencies in the country which are saying that the growth has potential, but whether you receive reports from private players internationally or from institutions like IMF or other World Bank or other places, the rankings of the country, whether it is Global Innovation Index or whether ease of doing business or anything else, the fairness with which most of the international agencies have also been praising the works that have been done, whether it is digitalization, financial inclusion or the others, is reposing the confidence of the international community and the Indian community in the country. Right, and equity being a big pillar on which these policies are also based, and I think that's the right. True. Right. Moving on to our next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India's share of the global dairy market will see significant growth in the years to come. He said this will benefit the small and marginal farmers of India and give them much needed supplementary income and contribute towards better nutrition for their children. Mr. Goyal was addressing the World Dairy Summit 2022 in Greater Noida today. He asked the International Dairy Federation to direct sustained efforts towards making small dairy farms in developing nations more productive, sustainable, quality-oriented and profitable. आइए चलते हैं परिवहन क्षेत्र में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली देहरादून नया राष्ट्रीय राजमार्ग इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बनने से यात्रा में कम समय लगेगा और दोनों शहरों के बीच की दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। नई दिल्ली में इनसाइट 2022 सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार अच्छी सड़कें बना रही है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 2 घंटे, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 2.5 घंटे, दिल्ली से श्रीनगर की दूरी 8 घंटे और दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे में तय करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुल टोल संग्रह राशि 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है और 2024 के अंत तक इसके 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। बहुत संक्षेप में परिवहन क्षेत्र में कह लें कि जो बदलाव आ रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर जो हमारा प्रदर्शन है और सुचारू यातायात की दिशा में हम कहां खड़े हैं वैश्विक पैमाने पर? अब देखिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क है जैसे और पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इन सभी के ऊपर काफी हद तक निवेश किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी योजना के तहत हो, और उसके तहत काफी तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है और हर एक गांव को जोड़ा जा रहा है शहरों के साथ, जिसका खासा असर पड़ेगा हमारे, चाहे वो खाद्य पदार्थ पहुंचाने की सामग्री पे हो, चाहे वो मेडिसिन पहुंचाने की सुविधा हो या कोई और फैसिलिटी की सुविधा हो। और इसी से इकोनॉमी, क्योंकि जो इंडिया है वो भारत में बसता है, गांवों में बसता है, और अगर आप उनको नहीं जोड़ पाए अपनी व्यवस्था से, तो कहीं ना कहीं उस ग्रोथ के मायने कम हो जाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि ये जो रोड और रेलवेज हैं और या पोर्ट्स हैं वो उन्हें जोड़ें। Absolutely. A look at the oil prices. Global crude oil prices today fell more than 1.5% as expectations of weaker demand and a strong US dollar ahead of a potentially large interest rate increase outweighed supply concerns. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.60 per barrel, while WTI crude prices was at $87.10 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। आज घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के मूल्यों में नरमी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 290 रुपए घटकर 49,730 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। उधर दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 200 रुपए टूटकर 56,785 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,713.20 प्रति औंस पर था। चांदी भी कमजोरी के साथ $19.45 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं श्रोताओं की ओर से डॉक्टर यामिनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Yamini, for coming on to our program. And now, before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witness modest losses. Sensex closes below 60,000 mark. Nifty settles below 17,900 points.
Rupee weakens 26 paise against the US dollar. And gold prices slip below 50,000 rupees per 10 gram for October contracts at the multi-commodity exchange. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.